Bismillahirrahmanirrahim. In this video, I will be going to show the damping in the RLC parallel circuit, which was unfortunately unable to be done practically in the lab. And the reason behind it was that there is no practical current source that exists in this nature. Yup, there are some, but that can act as current source but for a very short time, like an inductor. Inductor can be a current source but for a very short period of time. Therefore, this experiment is very hard to be performed on practical nodes, or you can say that we cannot get the waveform of RLC parallel damping or damping in RLC parallel circuit on the CRO. So, but PSpice was able to do that job. So, like the previous lab, it's nothing difficult. Just in place of V pulse that was providing us the constant voltage but alternating current, here we have another part which is called I pulse in the part section of PSpice. And I pulse is characterized by giving the constant current but alternating voltage, or you can say that कि ये हमें करंट देता है, वोल्टेज चेंज हो सकता है लेकिन करंट कांस्टेंट रहेगा. बट वी पल्स में वोल्टेज कांस्टेंट रहता था, करंट चेंज हो सकता था. एंड दैट इज द ओनली डिफरेंस बिटवीन करंट सोर्स एंड वोल्टेज सोर्स. करंट कीप्स द करंट कांस्टेंट, करंट सोर्स कीप्स द करंट कांस्टेंट एंड वोल्टेज सोर्स कीप्स द वोल्टेज कांस्टेंट. सो कुछ भी नहीं किया, वोल्टेज इंडक्टर उठाया, प्लेस किया, कैपेसिटर उठाया, प्लेस किया, रेजिस्टर उठाया, प्लेस किया, सबको पैरेलल ज्वाइन किया और आई पल्स के साथ अटैच कर दिया. और आई पल्स की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो बिल्कुल सेम वी पल्स की तरह ही है. I1 0, I2 जितना आप मैक्सिमम करंट देना चाह रहे हैं, TD टाइम डिले अगर आप चाह रहे हैं आपकी डायरेक्ट पल्स जो है वो हाई से स्टार्ट हो या 10 से स्टार्ट हो तो टाइम डिले देने की कोई ज़रूरत नहीं. और अगर चाह रहे हैं थोड़ा सा टाइम बाद 10 आए तो यहाँ पे कुछ ना कुछ दे दें. टाइम राइज टाइम फॉल वही पुरानी चीज़ें, पल्स विड्थ, और उसके बाद आ जाता है पीरियड. और पीरियड होता है वेव, एक कंप्लीट वेव कितने टाइम में पास करेगी. पल्स विड्थ 1 है, पीरियड 2 है, इसका मतलब हाफ के लिए ये 1 रहेगा और हाफ सेकंड के लिए 1 सेकंड के लिए ये 0 एम्पेयर्स पर रहेगा. अब करना कुछ नहीं है, सिर्फ जस्ट टेक द करंट मार्कर and place it on it. Second one here and third one here. As people know that how I calculated the value of R. First of all, just calculate the value of R critical, which can be found by equating R is equal to omega, where alpha is equal to 1 over 2 RC and omega is equal to 1 over under root LC. And by putting the values, I got R is equal to 0.5 as a critical resistance. And you know that in parallel RC circuit, when the resistance decreases, damping increases, and when the resistance increases, damping decreases. Or you can say that when the resistance increases, the system becomes under damped. When it decreases, the system becomes over damped. And on 0.5 it is critically damped. अगर मैं कुछ आगे पीछे बोल रहा हूँ तो ऐसे पता होना चाहिए आप लोगों को, इतनी बड़ी बात नहीं है, इतनी कोई मुश्किल बात भी नहीं है वैसे. अच्छा जी, तो ये अब if you just want to see the force response, then you can ignore the all other pulses except the first pulse. For example, or you can say that if you want to check its response only on its first pulse, then you can edit the simulation and its run time to only 1 second. See, I have written only 1 second because I want to see only the force response or the response of the circuit when only pulse is coming. यहाँ पे हमने ओके दबाया and well, let's see what will happen. Well, according to the circumstances and definitions and the phenomena, what should happen? On 0.5 it should be critically damped, on 0.25 it should be over damped, and on 2 it should be under damped. Now let's see the actual behavior. Let's start the damping, let's start the simulation. And simulation has now been run. और क्या आया है? Yep, it's
according to the expectations. The blue one, where is the blue one? Blue one was overdamped, and red one was underdamped, and green one was critically damped. And same is the thing showing here. Blue one was overdamped, green one was critically damped, and red one was underdamped. तो कुछ औखा नहीं था इसमें। अगर किसी को नहीं पता तो दोबारा बता दूं कि आप ट्रेस को विड्थ को भी इंक्रीज कर सकते हैं। ट्रेस प्रॉपर्टीज़ में जाएं, यहाँ पे कुछ इस तरह की चीज़ अपीयर होगी। इसकी विड्थ को इंक्रीज कर लें ताकि ये विजिबल हो जाए। ये देख रहे हैं कितना ज़्यादा विजिबल हो गया। इसी तरह की बाकियों को भी कर लें, बड़ा मुश्किल काम है। Yep, it's now all done. So it was all about damping in the parallel RC circuit, which was unable to be performed practically on C with the help of zero and function generator, but on PSPice everything is possible. Allah Hafiz.